लास्ट वीक सिटी ऑफ वैंकूवर के जो मेयर हैं केन सिम साहब, उन्होंने वैंकूवर को बिटकॉइन फ्रेंडली सिटी बनाने की बात की, प्रपोजल दिया, बल्कि एक मोशन फाइल किया जो कि दिसंबर 11 को उसकी सुनवाई होगी। I was curious, and so I just finished reading Jeff's book, The Price of Tomorrow. Read the Bitcoin Standard, then Truth Machine, Sovereign Individual, Layered Money, When Money Dies, a whole list of books. Went to a couple of Bitcoin conferences, had more conversations with Jeff, and then it became pretty clear. Yeah, we're going down this deep, dark rabbit hole where there aren't a lot of outs. Like I started looking at real estate prices in Vancouver, and I had heard a stat somewhere that real estate hasn't actually gone up since 1930 in the city of Vancouver. And that kind of sounds ridiculous, right? But when priced in gold, it actually hasn't gone up. So I actually updated some stats, and right now, like if you go back like from 1995 to 2022, so the last 27 years, when we started, the average house price in Vancouver was 500 grand, and now it's 2.43 million, or it's up 381%. If you priced it in gold, which isn't as good as Bitcoin, in 1995, it cost 958 ounces of gold to buy a house in Vancouver. And at the end of 2022, it was 957 ounces of gold. That's crazy. Yeah. So, I know that's a lot of meandering, and some people will say, well, you're cherry picking a number. If you actually pick any range, the variability might be 10 or 15%. It's not 300, it's not 400%, which it is in fiat. And so obviously there's something going on here. And then when you learn more about Bitcoin, you realize, wait a sec, it's decentralized. No person, company, or country controls it. It really doesn't care what other people do. It can't be manipulated, and it's finite. It's like literally, I think it's the greatest invention ever in human history. और उसके बाद काफ़ी र्यूमर्स फैली मार्केट में कि भाई जो वैंकूवर है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने जा रहा है बिटकॉइन का, जिस तरह ट्रम्प ने बात की अपनी इलेक्शन कैंपेन में, और सेनेटर्स जो हैं कांग्रेस की वो भी प्रो बिटकॉइन है और वो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया स्टेट, वहाँ की जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात की है, एटलीस्ट एट स्टेट लेवल। तो हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद गवर्नमेंट जो है इस गेम में शामिल हो रही हैं, किस तरह हम अपनी बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा बिटकॉइन के लिए रिज़र्व रखें। और कॉर्पोरेशंस तो काम कर ही रही हैं इस मामले में। माइकल सेलर जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी का CEO है, वो तो दबा के बिटकॉइन बाय कर रहा है और उसको अपनी बैलेंस शीट पर रख रहा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में उसने आज प्रेजेंटेशन दी, बल्कि आज ही 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन दी है कि वो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि भाई यू शुड ऑल्सो कंसिडर बाइंग बिटकॉइन एंड कीप ऑन योर बैलेंस शीट। तो एक फिनोमेना चल रहा है। Sorry for the interruption, guys. Please, if you like this content and you get any value out of it, please subscribe and like this because it will help my channel a lot. Thank you very much. Enjoy the video. वजह क्या है? क्या वजह है? मुझे जो समझ में आ रही है वजह वो ये है कि भाई अब दुनिया जो है वो इसको रिकग्नाइज कर रही है कि that is something an asset class which is performing, which has been performing for the last 10 years. अब आप उसको चाहे स्कैम कहें, चाहे आप उसको फ्रॉड कहें, उसने अपने आप को प्रूव किया है पिछले 12-14 साल के अंदर, ठीक है ना। और ये जो करंट सिस्टम है, फियाट सिस्टम, ये काफ़ी जो है अनफेयर होता चला जा रहा है अब नए आने वालों के लिए। यानी कि जो बूमर्स हैं, जिन्होंने पिछले 50 साल में वेल्थ एक्यूमुलेट की है, घर बनाए हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाई है, स्टॉक में पैसा डाला है, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो एक बना लिया है, उनकी लाइफ तो सेट हो गई है। लेकिन जो नए यंग जनरेशन आ रही है, उनके लिए क्या पॉसिबल है आज की तारीख में वैंकूवर जैसे शहर में घर लेना, जहाँ पे एवरेज डीटैच होम प्राइस जो है वो $2.5 मिलियन है? पॉसिबल है? बहुत कम चांस है कि कोई यंग बंदा अपनी यंग लाइफ के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below.
book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो अब लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई दिस सिस्टम इज़ रिग्ड, वी हैव टू डू समथिंग टू चेंज दिस और वी हैव नो चांस ऑफ सर्वाइवल, जिसकी वजह से अब जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं वो कंसिडर कर रहे हैं कि मे बी वी शुड think about keeping Bitcoin on our balance sheet, and that is giving people some thoughts. जब गवर्नमेंट सोच रही है, वॉल स्ट्रीट सोच रही है, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी और वैनगार्ड, जब इतनी बड़ी बड़ी फर्म जो हैं वो ETFs लॉन्च कर रही हैं BTC का, गवर्नमेंट्स इसमें कूद रही हैं, कॉर्पोरेशंस तो हैं ही हैं. Why should not an individual do this? Think about this. आप इसको अभी बाय करें या पुल बैक के बाद बाय करें, इट्स इंडिविजुअल डिसीजन, ठीक है. लेकिन इस पे गौर करना, इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना, आई थिंक दैट इज़ critical. Everyone should think about this. If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. क्योंकि this system has to change or collapse or whatever has to happen because this is not sustainable. ये जो जितना डेट इस वक्त सिस्टम में है ना, और नए यंग बंदे के लिए सर्वाइवल का कोई चांस ही नहीं बनता, तो समथिंग हैज़ टू चेंज. एनीवे, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपसे मैं अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ. थैंक यू. You are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan. I cover these topics in a very simple and plain English in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe and enjoy reading. Thank you.